Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the channel. I hope you all are doing well. Now students, in this tutorial we will design and assemble a universal joint using CAD software SolidWorks. In mechanical, a universal joint is basically a device used to transmit motion between two shafts. And now we will cover each component and complete the assembly with proper alignment. So now without waste the time, let's start the design. Now students, this is our universal joint. अगर हम इस टेबल में देखें तो हमारे पास इस यूनिवर्सल जॉइंट्स के जो नंबर ऑफ पार्ट्स है वो उनके नेम विद उनकी क्वांटिटी हमारे पास गिवन है। नंबर वन पे हमारे पास है ड्राइविंग जॉक और इसकी क्वांटिटी हमारे पास वन। सेकंड नंबर पे हमारे पास है बेरिंग क्रॉस और उसकी क्वांटिटी वन। देन थर्ड नंबर पे हमारे पास बोल्ट है। फोर पे बुश है। ये दोनों हमारे पास टू टू क्वांटिटीज़ हैं इनकी। और फाइव पे पिन एंड सिक्स पे ड्राइविंग जॉक अगेन आ गया। ओके, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, हम वन बाय वन इनको क्रिएट करेंगे। नाउ अगर हम फर्स्ट वन आप देखें तो हमारे पास है ड्राइविंग योक। आप यहाँ पे देखें येलो कलर में आपके पास ड्राइविंग योक गिवन है जो फर्स्ट नंबर है जिसका। अगर आप इसको देखें तो हमारे पास इसके तीन व्यूज़ गिवन है। हमारे पास सबसे पहले फ्रंट व्यू गिवन है, देन हमारे पास राइट सेक्शन व्यू गिवन है राइट साइड, एंड देन हमारे पास टॉप व्यू गिवन है। तो आप तीनों में से कोई भी एक व्यू को यूज़ करके आप पूरा पार्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप फ्रंट व्यू को ले देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसकी डायमेंशंस गिवन है। हम इस तरह का एक स्केच क्रिएट करें एंड देन उसको हम एक्सट्रूड कर दें एंड देन फिर आगे मज़ीद इसको क्रिएट कर सकते हैं। नाउ अगर आप ये राइट का जो सेक्शन व्यू है अगर आप इसको देखें तो हमारे पास ये डायमेंशंस गिवन है। 15 मिलीमीटर थिकनेस ऑफ दिस वॉल, सेम 15 मिलीमीटर दिस वन, एंड देन ये आपके पास होल क्रिएट हुआ है। तो इस तरह की आप ये साइड व्यू को यूज़ करके आप ये पूरा पार्ट क्रिएट कर सकते हैं। और ये टॉप व्यू है। इसी तरह टॉप व्यू पे भी आप ये वाला स्केच क्रिएट करके रेक्टेंगल क्रिएट करके आप एक्सट्रूड करके आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो मीन्स ये कि तीनों व्यूज़ को आप यूज़ कर सकते हैं और आप ये क्रिएट कर सकते हैं अपना पार्ट। तो आज हम जो यूज़ करने जा रहे हैं वो हम टॉप व्यू यूज़ करने जा रहे हैं एंड टॉप व्यू के थ्रू हम पूरा पार्ट क्रिएट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। नाउ अगर आप टॉप व्यू में देखें तो हमारे पास कुछ डायमेंशंस गिवन है। हमारे पास सबसे पहले टू सर्कल्स हैं। नंबर वन, इनसाइड सर्कल 30 मिलीमीटर डाया, आउटसाइड का जो सर्कल उसका हमारे पास 60 मिलीमीटर डाया है। एंड देन हमारे पास एक यहाँ पे की प्लेस है। अगर आप इस की डायमेंशन देखें तो हमारा इस सर्कल के सेंटर से लेके इस बॉटम ऑफ की प्लेस तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 18 मिलीमीटर है। एंड देन हमारे पास इसकी जो टोटल लेंथ है वो हमारे पास 8 मिलीमीटर है। एंड देन ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। इसकी जो हमारे पास डायमेंशन है वो हमारे पास 60 मिलीमीटर एंड देन 19 मिलीमीटर हमारे पास इसकी बोथ डायमेंशंस हैं। एक को लेंथ कह लें, एक को विड्थ कह लें, आप किसी को भी। अब ये आपके पास स्केच क्रिएट हो गया। अब आपने क्या करना है, इन सर्कल को एक्सट्रूड करना है एंड रेक्टेंगल को एक्सट्रूड करना है। इन सर्कल को कितने एक्सट्रूड करना है, 30 मिलीमीटर। एंड देन आपके पास रिवर्स डायरेक्शन में ये 15 मिलीमीटर होगा। फिर देन इस 15 मिलीमीटर से ऊपर आपके पास जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास होगा 35 माइनस 15, आपके पास बच गया 20। मीन्स आपके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपका होगा 20 प्लस 23 मीन्स 43। तो यूँ इसकी कुछ डिवीजन होगी। तो चलते हैं हम सॉलिडवर्क्स पेज पे। तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको क्रिएट करते हैं हम। फर्स्ट सेलेक्ट फ्रंट प्लेन फॉर स्केच, देन क्रिएट दी center rectangle, then assign the dimensions. This one is 60, enter. This one is 90, enter. Now we create the circles, two circles, and then assign the dimensions. First one is 30 millimeter dia, second one is 60 millimeter dia, enter. Now we create the key place. First we select the line and then create randomly key place just like this one. Okay, select. Now we assign the dimensions. First we make it horizontal. Okay, now we assign the dimensions. This is 8 millimeter, enter here. Okay, now we make it exact on the same axis. Assign 0 dimension, enter. Okay, now
The mid of this line and this center is exact on the same axis. Now we assign the next dimensions from this point to this one is exact 18 millimeter. Enter here. Okay. Now our key place is ready. Now we can trim the remaining part. Okay. Now look here. Our whole sketch is ready. Now we assign the extrude command and then extrude this face, and the dimension is 30 millimeter. Enter here. Okay. Now look here. Okay. Now we can make the extrude rectangle sketch. Select the sketch, extrude, reverse direction, assign the dimension 15 millimeter. Enter here. Also select this face and this one millimeter. Okay. Now look here. Our bottom part is ready. Now we are going forward and select this one for sketch. Okay. Now we create a line from this one to this one. Make full rectangle. Okay. Now we assign the dimensions. This one is 15 millimeter. Okay. And this one is 60. Okay. Now we assign the extrude command. Okay. And how many? That is 43. 43. Enter here. Okay. Now look here. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास ये वॉल क्रिएट होगी. अब जस्ट हम सिंपल इसको मिरर कर लेंगे. सेलेक्ट दी मिरर कमांड एंड मिरर फेस प्लेन आपके पास कौन सा है जी. आप इसको टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लें. एंड देन अब आपने मिरर किसको करना है. आप फीचर मिरर में जाएं और इसको सेलेक्ट कर लें. ओके. ऑल्सो सेलेक्ट दिस फेस. ओके. नाउ लुक हियर. ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो रिमेनिंग चीज़ है वो है सिंपल. इसके ऊपर हमने एक होल क्रिएट करना है. अगर आप इसकी डायमेंशंस देखें इस होल की, तो हमारे पास है 16 millimeter डाया एंड सेंटर ऑफ द सर्कल टू दिस पॉइंट मींस एंड ऑफ दिस पार्ट is 35. Okay. Now simply going to the SolidWorks page and then ready for sketch. Make the hole. Okay. Assign the dimensions 16 millimeter dia, and from this point to this one is 35. Enter. Okay. Now going to feature extrude cut command, going to through all both. Okay. Now look here. The hole is ready. Now we can going to again for sketch and then make the circle again at the center of this point, this circle, sorry. Okay. Assign the dimension. This circle is exact 23 is the radius and then 46 is the dia. Enter. 46 dia. इंटर. अब ये मैंने 46 क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास जो डायमेंशंस गिवन है वो हमारे पास इस आउटर सर्कल की या आउटर कर्व की जो रेडियस है वो 23 है. देन जो डायमीटर बनेगा वो हमारे पास 48 बनेगा. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व पेज एंड देन नाउ अब हमने क्या करना है. अब हमने एक लाइन क्रिएट करनी है और उसको हमने टेंजेंट करना है इस सर्कल के और उसको टच करना है इस पॉइंट के साथ. अब इस पॉइंट के साथ हम किस तरह टच करेंगे. हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पे शो नहीं हो रहा इस फेस पे, तो हम एक काम कर लेते हैं. सबसे पहले गोइंग टू दी राइट प्लेन फॉर स्केच, सेलेक्ट दिस फेस फॉर स्केच. नाउ मेक द लाइन. हम एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं.
Okay, select. Now select this face for sketch. We can use the this top plane for sketch. Select this face for sketch. Okay, now we make the line again from this point to this one. बाद में हम इसको रिमूव कर देंगे. नाउ अब हमने क्या करना है, एक लाइन क्रिएट करनी है इस पॉइंट से लेकर रैंडमली एट दिस पॉइंट, एंड देन हमने इस लाइन को इस सर्कल के टेंजेंट कर लेना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट वी सिलेक्ट दिस वन, प्रेस कंट्रोल की एंड सेलेक्ट द सर्कल एंड दिस वन टेंजेंट. ओके, नाउ द सेम प्रोसीजर, आप एक लाइन क्रिएट करेंगे एंड देन उसको टेंजेंट कर लें सर्कल के. सेलेक्ट लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू randomly this one. Okay, then create the tangent this line to this circle. Now look here, tangent. Okay, now simply we are going to features, use extrude cut command, select this face, this area, this, and also this one. Okay, now look here, through all both. Okay, now look here. Okay students, तो ये हमारे पास शेप क्रिएट हो गई है. सिंपली हम इसको हाइड कर देते हैं. अब इसको सिंपल कलर साइन करने जा रहे हैं. गोइंग टू कलर कमांड and then assign the color as you want, just like green color. Okay, now we can going to save it, save as, assign the U joint 1, enter. Okay, now we are going to the next part, and that is number 2, bearing cross. Now the bearing cross is this one. अगर आप इसकी डायमेंशंस देखें तो हमारे पास ये क्रॉस टाइप का जॉइंट है, और इसकी जो डायमेंशन है वो हमारे पास 60 है टोटल लेंथ इसकी. एंड देन हमारे पास जो इसके होल्स हैं उसके हमारे पास जो डायमेंशन है वो हमारे पास 16 डायमीटर एंड 30 डायमीटर है. दोनों की सेम है हमारे पास डायमेंशन. और जो इस सर्कल का जो सेंटर है वो दूसरे सर्कल के सेंटर से 23 मिलीमीटर का डिस्टेंस पे है. एंड नाउ दिस इज़ द डायमेंशंस, एंड इफ़ यू लुक हियर, सेम डायमेंशंस, दोनों जो हमारे पास क्रॉस बेरिंग क्रॉस है दोनों की सेम डायमेंशंस है. आपने अगर आप इस व्यू पे देखें तो हमारे पास ये वाला जो बेरिंग, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास दोनों बेरिंग के दरमियान जो फिलेट यूज़ होगा वो होगा जी R5, रेडियस 5, और ये ऑल सरफेस पे होगा ये फिलेट. मींस दोनों जो बेरिंग का दरमियान का टचिंग का वाला जो एरिया ना, मींस दोनों जो बेरिंग्स हैं उसका जो आपस में जो सरफेस टच कर रही है उस पर जो फिलेट अप्लाई होगा वो होगा R5 का. ओके, नाउ दिस इज़ द डायमेंशंस. वी आर गोइंग टू द सॉलिडवर्क्स पेज, create new file, part. Okay, now select the front plane for sketch, create the circles, 2 circles, and then assign the dimensions. This one is 16 millimeter dia, enter. This one is 30 millimeter dia, enter. Okay, now we assign the extrusion, that is 60 millimeter, enter. Okay, now the one bearing is ready. Now we select the top plane for sketch. Okay, now we create the circle at this point randomly, make 2 circles, and then assign the dimension. This one is 16, enter. This one is 30, enter. Okay, now we assign the dimension from this center to this center line. First we create the line that passes to the axis of the origin of this bearing. Okay, now we create the dimension from this point to this line is exact 23, enter. Okay students, now look here. Now we are going to the feature,
use extrude boss command and assign the dimension and make it mid plane. Okay, now look here, our bearing is ready. Now just we applying the fillet, going to fillet command and select this option, select this edge and then assign the radius 5. Okay, now look here, the bearing is ready. Okay students, now we are just going to assign the color just like this one. Now look here, if you assign this one, I think this one is better. Okay, okay students, this is our bearing cross. Now we can save it, save as U joint to enter. Now we are going to the next part, and that the third one is bolt. If you look here, the bolt, its dimension is, the head of bolt is 8 millimeter, the tail of bolt is 105 millimeter length. Now if you look here, there is the circle on the tail of the head that is 4 millimeter dia, and the chamfer on both end that is 1 cross 45-degree angle. If you look, the circle of the head of the bolt is 24 millimeter dia and the tail circle diameter is 16 millimeter dia. Now we are simply going to the SolidWorks page and create new file, part. Okay. Now first we create the sketch, front plane, ready for sketch, select the circle. Okay. Again circle, create. Okay. Now we are going to the dimensions. This one is 16, this one is 24. Enter. Okay. Now we assign the extrusion. This one is 105. Enter. Not using the mid plane. This is blind. Okay. And select the sketch. Extrude again. Select, use the reverse direction and select the selected contours. This one. Also this one. Okay. And the dimension is 8. Enter. Okay. Now look here, the bolt is ready. Just assign the chamfer, chamfer command and then select the distance and angle. Distance is 1 millimeter and the angle is 45. Okay, select the edge, this one and this one. Okay, now look here, the chamfer is also ready. Now we are going to the top plane sketch. Okay, create the circle. Okay, assign the dimension 4 millimeter dia. Enter. And then from this point to this one is 94. Enter. Okay, now we are simply going to feature extrude cut and select the through all both. Okay, now look here, our hole is ready. Now we are simply assign the color. Now select the whole bolt and assign the color. Just like this one or this one. Which one is better? I think this one is better. Okay, now we can going to save it
save as U joint 3, enter. Okay, now we are going to the next part, and that is 4 1 is bush. If you look here, the bush dimension, that is two circles. First one is 16 millimeter dia and the next one is 24. And then if you look here, the section view of this bush, there is the hole of 4 millimeter dia that make inside the bush, and the dimension of the center of this hole to the end of the bush is 4 millimeter dia and the total thickness of bush is 8. Okay, now we are going to the SolidWorks page, create new file, part, okay, make sketch, front plane, ready for sketch, create two circles and then assign the dimensions. This one is 16, this one is 24. Now assign the extrusion, going to feature extrude, total is 8 millimeter, thickness, enter here, okay. Okay students, now select this face for sketch. First we select the right plane for sketch, okay, create the circle, okay, assign the dimension from this point to this one is 4, enter, and the circle is already 4 millimeter dia, okay. Going to feature extrude cut, select the through all both, okay. Now look here, okay students. Now if you look here, the one thing is remaining, that is the fillet at one end and its radius is 1, okay. Going to SolidWorks page, apply fillet and select the one edge and 1 millimeter radius, okay. Now look here, our whole part is ready. Now we are simply going to solid. Now we assign the color, that is whole body, okay. Select also this face, okay. Now look here, the bush is ready. Now we can save it, save as U joint 4, enter, okay. Now we can going to the next part, and that is fifth one, pin. The pin is so simple, just a simple rod type shape that's length is 30 millimeter and the 4 millimeter dia, and the edges chamfer is 0.5 cross 45 degree, okay. Going to SolidWorks page, create new file, part, okay. Select front plane for sketch, create circle, assign dimensions 4 millimeter dia, enter, using extrude command, assign the dimensions 30, enter, okay. Now select the chamfer command, select the both edges, assign the distance 0.5, enter, and 45 angle, okay. Okay students, our rod means pin is ready. Now we simply assign the color and assign the color whole face, okay. We can save it, save as U joint 5, enter, okay. Now we are going to the next part, that is 6-1 driven yoke again.
सेम एज फर्स्ट, बस हमने इसमें क्या करना है, कलर इसका चेंज कर देना है, सिर्फ कलर चेंज है और कुछ भी नहीं है, ताकि ये दोनों जॉइंट्स आपस में डिफरेंट नज़र आएँ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम यूँ भी कर सकते हैं कि अगर हम जाएँ असेंबली में एंड देन हम इसको 2 दफ़ा इंसर्ट करके फिर एट द एंड हम किसी एक का कलर चेंज कर दें। ओके? तो यूँ भी मुमकिन है, वैसे अगर आप दोबारा से क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप तब भी कर सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि आपने अपना टाइम वेस्ट करना है। बस अब आप जाना है सिंपली असेंबली में एंड देन असेंबल ऑल द पार्ट्स। नाउ वी कैन गोइंग टू द सॉलिडवर्क्स पेज, गोइंग टू न्यू फाइल, select assembly. Okay, now we can insert the first part. Now look here, enter, then again insert first part, select the tab again. Okay, and then rotate y axis, y, this one. Okay, enter here. Okay students, now we insert the next one, bearing cross, insert this one. Okay, now we can use the mate. First we make concentric command, use, select this one and this one. Okay, now if you look here, this one. Now we can use again concentric command, select this one and this one. Okay, if you look here, now we can use the coincident command, select this face and this one. Okay, now we can again use the coincident command, select this face and this one. Okay, okay students, now we are going forward and then insert the next component, and this one is bolt. Okay, we can make it concentric first, use concentric command, select this one and this one. Okay, we can move it upward, use the coincident command, select this face with this one. Okay, now we insert again the bolt. Okay, select the mate commands and then use concentric, select this face with this one. Okay, now we can use the coincident command, select this face with this one. Okay, now we can insert the next component, and that is bush. We can use the tab button and then rotate x-axis again. No, okay. We can use mate commands, select concentric, select this face with this one. Okay, use coincident command, select this face with this face. Okay, again we can insert the bush. Okay, now we can press the tab and y-axis. Okay, we can use the, first we place it. Okay, then we use the mate commands, select the concentric, select this one and this circle. Okay, now we can make it outside.
outward, and then again use the mate command. Select the coincident, select this face and this face. Okay, now look here. The one thing is remaining, that is rod, means pin. Insert component. Okay, now we can use the mate commands. Use concentric, select this face, this circle, make concentric with this one. Okay, now if you look here, now we make it in exact center. Use the advanced width, and then select the this face, this face and this one. Okay, now look here, is an exact center of the bush. Now we can insert again the pin. Okay, use the mate commands, that is concentric first, and then make this one with this one concentric, and then again use concentric, select this one with this one. Okay, now look here, these are movable. We use again the width command, going to advance, select the width command and select this face and this face and select this circle. Okay, now look here, our whole assembly is created universal joint. Now the one thing is remaining, we assign the this part to make it different color. First we, it's okay, and then going to color command, assign the color, this one, this part is different. Select the yellowish color, select this face. Okay, it make it different. Okay students, so this is our today assembly. I hope you will understand it better, and you will able to create this assembly on your own SolidWorks page. This is our universal joint. So now thanks for watching. If you found this tutorial helpful, make sure to like, share and subscribe to the channel for more CAD and SolidWorks tutorial. See you in the next video. Stay safe, stay with us. Allah Hafiz.